Now, in the last class, what we talked about was the cell when we talked about the human cell, right? We talked about not the human cell, astaghfirullah, the animal cell, and we talked about all the organelles that were present inside of it. ठीक है? अच्छा जी, आज हम लोग क्या बात करेंगे? We are going to compare this animal cell with the plant cell. ठीक है, so we did this last class as well, I guess. So what we're going to do is we're going to compare this with the plant cell. Now, अब अगर हम लोग plant cell के बारे में बात करें, so let's draw the structure of the typical plant cell. The very first thing that we're supposed to remember that unlike the animal cell, the plant cell that we have are what? They are regular in shape. हमारे पास जो एनिमल सेल्स होते हैं ना वो इरेगुलर होते हैं, हम लोगों ने ये बात करी थी। प्लांट सेल्स हमारे पास जो है वो रेगुलर है। क्यों रेगुलर है? विल टॉक अबाउट दिस इन अ मिनट। Now, most of the organelles that we have, they are pretty similar. ठीक है, कुछ में differences है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, now the very first organelle that we'll have, ठीक है, अगर हम लोग प्लांट सेल के बारे में बात करें तो भाई पहला वाला organelle हमारे पास क्या आ जाएगा? We're going to have the cell membrane. So भाई प्लांट सेल्स हमारे पास जो होता है ना उनके पास भी क्या होती है? उनके पास भी सेल मेम्ब्रेन होती है। एंड अगेन लाइक दैट ऑफ एन एनिमल सेल, द सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो इरेगुलर। तो जो मेरे पास पहला वाला ऑर्गेनल आ गया वो हमारे पास क्या आ गई? सेल मेम्ब्रेन आ गई। ठीक है, अच्छा जी। नाउ अब क्या इस प्लांट सेल लिविंग सेल? ऑब्वियसली इट्स अ सेल, इट शुड बी लिविंग, इट शुड बी लिविंग। ठीक है, तो इन सिंस इट्स अ लिविंग सेल, इट शुड contain the cytoplasm as well. All right, अब क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, राइट, तो it's also, you know, again that's what is basically making it a living cell. ठीक है जी। now अब अगर हम लोग देखें, do the plant needs or follow the rules of genetics? Do the plant cells follow the rules of genetics? Yes, apparently they do। ठीक है, अगर मेरे पास एक एप्पल सीड होगा तो उसमें से एप्पल ट्री ही ग्रो करेगा, उसमें से ऑरेंज ट्री ग्रो नहीं करेगा। ऑलराइट, so the plants also follow the rules of genetics. And since they follow the rules of genetics, they will also have a nucleus. They will also have a nucleus. Okay. Now, the nucleus inside the plant cell comes with everything that a normal nucleus or the nucleus from the animal cell has. Right. Now, this particular nucleus is going to have the nuclear membrane. This particular nucleus is going to have the nucleoplasm, the chromatin fiber, the nucleolus, okay, so on and so forth. So it's going to be exactly like that of a animal nucleus. Okay. Do the plants or do the plant cells need to make their proteins? Yes, they also need to make their proteins, and hence they will also have what? They will also have the ribosomes. तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? चार ऑर्गेनल्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अच्छा जी। नाउ दैट वी know this, when we talk about the ribosomes, when you know the ribosomes, अच्छा और कौन कौन से organelles हैं हमारे पास? Do the plant cells carry out respiration? Yes, they do carry out respiration, and for respiration they're going to have mitochondria, right? इनके अंदर कौन सी वाली रेस्पिरेशन करवाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन अगेन साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रही है। तो ये कुछ मिला के हमारे पास पांच ऑर्गेनल्स हैं जो कि क्या हो गए? विच आर द सेम इन बोथ द एनिमल एंड द प्लांट सेल्स। ऑलराइट, अच्छा, अब हमारे पास ये जो प्लांट सेल्स हैं, they also contain some additional organelles, those organelles that you would never find in an animal cell. The first organelle that we'll talk about is this, right? So the
व्हेन वी टॉक्ट अबाउट द एनिमल सेल्स, हम लोगों ने एक बात नहीं करी थी कि भाई एनिमल सेल्स के अंदर ना स्टोरेज बॉडीज होती हैं जिन्हें हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। लेकिन ये जो वैक्यूल्स हमारे पास होते हैं ये वैक्यूल्स परमानेंट नहीं होते। दीज वैक्यूल्स आर नॉट परमानेंट। These vacuoles that the animal cells have, they are temporary. लेकिन जब हम plant cells के बारे में बात करते हैं, when we talk about the plant cells, plant cell के पास कैसा vacuole होता है? They have a large permanent vacuole. sap vacuole भी कहते हैं हम लोग इसे। ठीक है। अच्छा, ये वैक्यूल का काम क्या है? द वेरी सेम एज दैट वैक्यूल इन द एनिमल सेल, दैट इट एक्ट्स एज अ व्हाट? इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज बॉडी। इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज बॉडी। इसका जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल सैप। अच्छा, इसके फ्लूइड में मुझे क्या मिलेगा? मेनली वाटर। वाटर के अलावा व्हाट एम आई गोइंग टू फाइंड इनसाइड द फ्लूइड ऑफ द प्लांट सेल? आई एम गोइंग टू फाइंड starch, I may find some lipids, I may find some mineral ions. All right? यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा, इसके वैक्यूल की इसके वैक्यूल की जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है, राइट? उस वैक्यूल की जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन ऑफ द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज व्हाट वी कॉल एज द टोनोप्लास्ट, राइट? हाउ वुड यू डिफाइन टोनोप्लास्ट? हम लोग कह देंगे इट्स द membrane of the permanent vacuum. All right, are we clear till here? यहाँ तक कोई मसला? Any questions at all, guys? All right, clear. ठीक, वालेकुम अस्सलाम बच्चे, I'm sorry, I don't read it yet. अच्छा जी, now, okay. अब एक और चीज, भाई, one additional thing that the plant cells contain. So let's mark this organelle, the sixth organelle, that animal cells do not. Not all the plant cells, but only the photosynthetic plant cells. They have an organelle that we call as what? Chloroplast. This chloroplast is an organelle that contains a pigment, a proteinaceous pigment called as chlorophyll. And what does it do? It carries out photosynthesis. It carries out photosynthesis. ठीक है जी? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, नाउ अब एक आखिरी चीज रह गई, एक आखिरी ऑर्गेनल रह गया है। This last organelle that we have is the outermost boundary that you will find in every plant cell. And that's what makes the plant cells, oopsie, and that's what makes the plant cells regular. Very good. And that's the eighth organelle, and that's going to be the cell wall. अच्छा, अब जिस तरीके से in the last class हम we talked about the cell membrane. हम लोगों ने cell membrane के बारे में दो बातें करी थी कि भाई what is the function, वो nature of the cell membrane, what is it made up of. इन दो बातों के अलावा हम लोग सेल वॉल के बारे में एक और बात करेंगे। ठीक है। सेल वॉल को अगर हम लोग देखें, सबसे पहली बात, व्हाट इसका नेचर क्या है? इज इट पार्शियली परमिएबल, इज इट फ्रीली परमिएबल? हम कहते हैं कि भाई द सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल से क्या मतलब है कि भाई एनीथिंग दैट फिट्स इनटू इट कैन पास थ्रू, कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, कोई रुकावट नहीं है। दूसरा, इसका हमें क्या पता होना चाहिए इसके बारे में कि भाई इट इज मेड ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। सेल्यूलोस क्या है? हम लोग 3 चैप्टर बाद देखेंगे कि भाई इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। So while the cell membrane is made up of lipids, all the cell membranes are made up of lipids. Cell walls of the plant cells are not made up of lipids, they're made up of a carbohydrate called as cellulose. ठीक है। अब इसका काम क्या है? इसका काम क्या है?
ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अच्छा, अब पता है व्हेनेवर आई टीच प्लांट सेल्स ना, मैं थोड़ा जेलस हो जाता मैं थोड़ा जेलस हो जाता ठीक है। जेलस इन व्हाट सेंस? जेलस इन व्हाट सेंस कि भाई अब अगर प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल है जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, अब मेरे आई एम एन एज अ ह्यूमन आई एम एन एनिमल राइट, एज अ ह्यूमन आई एम एन एनिमल, व्हाई डोंट आई हैव अ सेल? ठीक है, मतलब आई डोंट आई नीड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मुझे भी तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए मतलब। ठीक है, तो मुझे भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए, तो shouldn't I also as an animal shouldn't I also have a cell wall? It simply makes sense right कि भाई मेरे पास सेल वॉल क्यों नहीं है? देखो the reason is that even though plant cells have they have individual cell walls, I as a human, as an animal, for the very same function, to provide me with structural support, मेरे पास ना पूरा मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम है। ठीक है, मेरे पास पूरा एक मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम है। I don't need a cell wall to provide me with protection. Okay, I've got a whole system dedicated to it that is not only providing me with protection, that is not only giving me structural support, but at the same time, it's also helping me to carry out locomotion. What is locomotion? Is the ability to move about. बात समझ में आ रही है? So for that reason, since I have a whole musculoskeletal system, मुझे सेल वॉल की जरूरत नहीं है। Do we understand this? यहाँ तो किसी को कोई मसला? और कुछ? अब so this is the only difference between the animal and the plant cells. uh, बस और कोई इसके अंदर वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। अच्छा हाँ, ऑल देर आर, अगर हम लोग डिफरेंसेस देखें ना, तो सिमिलैरिटी ज्यादा है, डिफरेंस तीन। ठीक है, नाउ इफ यू वुड कंपेयर द प्लांट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना टेबल बनाते हैं। ठीक है, हम लोग एक टेबल बनाते हैं। That table, what we'll do is we'll try to compare the animal and the plant cells together. Now, so अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स की। अब हम लोगों ने कहा ऑर्गेनल स्पेसिफिक टू, नंबर वन प्लांट सेल, एंड देन विल कंपेयर इट विद द एनिमल सेल। तो कहने का मकसद क्या, व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू हियर? मैंने कहा मेरे पास तीन ऐसे ऑर्गेनल हैं जो मुझे सिर्फ प्लांट सेल में मिलेंगे, एनिमल सेल में कतई कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से ऑर्गेनल हैं? नंबर वन, लेट्स स्टार्ट विद द इजियर वन फर्स्ट, वी हैव द सेल वॉल, एनिमल सेल में कभी नहीं मिलेगी। दूसरा हमारे पास क्या है? एनिमल्स आर नॉट ग्रीन। डू वी हैव एन एनिमल दैट्स ग्रीन? आई डोंट थिंक सो। नो, देयर इज वन एनिमल, ओके, क्लोरोप्लास्ट। तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है?
लार्ज परमानेंट वैक्यूम। ठीक है, वेरी गुड। अब इसी तरीके से अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि भाई गिव मी 3 ऑर्गेनल्स दैट आर स्पेसिफिक टू एनिमल सेल्स, प्लांट सेल में कभी नहीं बनेंगे, यहाँ फंस जाएंगे हम लोग। अब अगर हम लोग दोबारा एनिमल सेल्स के पास जाएं, हम लोगों ने बात करी थी कि द एनिमल सेल्स दे हैव व्हाट वी कॉल एज अ माइक्रोविलाई, जो उनके अंदर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। वेयर आर द माइक्रोविलाई फाउंड? दे फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। भाई क्या प्लांट सेल के पास स्मॉल इंटेस्टाइन है? नहीं, ये प्लांट, सॉरी, ना प्लांट सेल के पास, प्लांट्स के पास जनरली इंटेस्टाइन नहीं होती, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वेरी गुड। तो द फर्स्ट ऑर्गेनल दैट द प्लांट सेल or the animal cell will have, but it will not be present in the animal cell, sorry, plant cell, will be the microvilli. Very good guess for better. The second organelle is going to be the cilia. भाई जब प्लांट सेल के पास, प्लांट्स के पास ट्रैकिया नहीं है, वो म्यूकोसी प्रोड्यूस नहीं करता, तो क्या बीट करेगा? अब तीसरा ऑर्गेनल क्या है? वेरी गुड guess for better. The third organelle that is specific to animal cells, but you would never find in the plant cells, are the centrioles. For those who have forgotten what a centriole is, centrioles are organelles that help in cell division. तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या प्लांट सेल्स सेल डिवीजन नहीं करते? वो बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनका मैकेनिज्म अलग है। They do cell division through a different mechanism where they do not have a need for the centrioles. All right, यहां तक बात याद रहेगी? अच्छा जी। Now let's do one last thing before we get done with the very first chapter today. एक बात और करते हैं, फिर हमारे ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन विल स्टार्ट ऑफ विद डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर। अच्छा, अभी तक, चलो इसको मैं थोड़ा साइड में चलता है। Smooth this towards the corner. Okay, अभी तक we have talked about 3 places in both the animal and the plant cells which have a fluid. We talked about 3 different fluids, 3 different membranes. Now, where are those 3 different fluids and 3 different membranes found? ठीक है, तो हम लोग एक छोटे से टेबल बना। So we're going to name the structure. We are going to name the membrane that it has, and we are going to name the fluid that it possesses. All right. Acha. The very first structure that we have is a whole cell, whether animal cell, whether plant cell. उसकी सेल, उसकी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहेंगे? we're simply going to call it the cell membrane. उसका सेल का जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। प्रिटी अंडरस्टैंडेबल, right? But the second structure that we have is what is the nucleus. The membrane of the nucleus is called as the nuclear membrane. The fluid of the nucleus is called as nucleoplasm. Very good. ठीक है भाई। अच्छा जी, वेरी गुड। अब तीसरे उस पर आ जाते हैं। फिर हमने एक और स्ट्रक्चर पढ़ा भाई, जिसकी मेम्ब्रेन और जिसका वो थे। वो कौन सा वाला स्ट्रक्चर है? वो हम लोगों ने प्लांट सेल्स के अंदर स्पेसिफिकली पढ़ा, परमानेंट वैक्यूम। सही, यूजुअली बच्चे भूल जाते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको अलग से वो कर रहे हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट। वेरी गुड गर्ल्स। जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल्स। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा,
वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट, हमारे यूजुअली सिलेबस के अंदर ना वो डिफरेंशिएट स्पेशलाइज नॉन स्पेशलाइज सेल को डिफरेंशिएट करने को बोलता है। तो हम लोग अभी स्पेशलाइज सेल्स के फंक्शंस नहीं कर रहे, बिकॉज अगेन रेड ब्लड सेल हो गया, जाइलम वेसल्स हो गए, एपिथेलियल सेल हो गए। जब हम लोग उस टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे तो हम लोग वी गोइंग टू टॉक अबाउट दो सेल्स इन डिटेल एनीवे, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड वेस्ट टाइम टॉकिंग अबाउट दोस स्ट्रक्चर्स राइट हियर। ठीक है, so with this we're done with the very first topic.